Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the judicial creativity. What is the judicial creativity under the judicial process? आज हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम जुडिशियल प्रोसेस एंड जुडिशियल क्रिएटिविटी क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द जुडिशियल प्रोसेस रेफर्स टू द प्रोसीजर बाय विच द कोर्ट्स इंटरप्रीट एंड अप्लाई टू लॉ टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। क्या बोला है? जुडिशियल प्रोसेस क्या रेफर करता है? प्रोसीजर रेफर करता है। कोर्ट्स टू इंटरप्रिट करना है लॉ को हमको, और अप्लाई करना है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स. It involves the various stages including the case filing, hearings, arguments, judicial reasoning and the final judgment. Okay, the judicial process ensures that the law applied consistently and fairly, maintaining the justice and upholding the rule of law. Okay, उसके बाद हम definition of judicial process and judicial creativity देखेंगे। उसके बाद द जुडिशियल प्रोसेस रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस through which the court interpret, apply and enforce the laws. Okay, क्या बोला है? जुडिशियल प्रोसेस क्या है? रेफर्स टू structured procedure through which the court interpret, apply and enforces the laws to resolve the dispute and upholds the justice uphold करने के लिए जुडिशियल प्रोसेस क्या करता है? स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर वे में करता है, रेफर करता है, through which the court interprets and enforce the laws to resolve the dispute and uphold the justice. It involves the legal reasoning, adherence to the precedents and the application of the constitutional and statutory provisions to the ensure the fairness and consistency into the legal system. उसके बाद जुडिशियल क्रिएटिविटी, जुडिशियल प्रोसेस समझ आया। जुडिशियल क्रिएटिविटी क्या है? जुडिशियल क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ जजेस। जुडिशियल प्रोसेस में क्या है? जुडिशियल प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर है, वैसे ही वो अप्लाई करेंगे। जुडिशियल क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द जजेस to interpret, ability of judges to interpret, modify and develop the legal principles innovatively, and especially in the cases where statutes are ambiguous and silent. Where the statute are ambiguous and silent, there the judicial creativity is applying their mind, and it allows the judiciary to adapt the law changing societal needs. It allows क्या करता है? It allows the judiciary to adapt the laws to changing the societal needs, ensuring the justice and legal evolution through the mechanism like the judicial precedent, जैसे कि केस लॉ, एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशंस एंड दी एक्सपांसिव इंटरप्रिटेशन एंड दी जुडिशियल एक्टिविज्म जो रहता है वहाँ पे। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस इंक्लूड्स। की एस्पेक्ट्स क्या है जुडिशियल प्रोसेस में? इट इंक्लूड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। सबसे पहले तो क्या इंक्लूड करता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जजेस एनालाइज द स्टैट्यूट, प्रेसिडेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू दे डिलीवर द जजमेंट्स। क्या बोला है? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में जजेस क्या एनालाइज द स्टैट्यूट करते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट, केस लॉ जो रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू डिलीवर द जजमेंट्स, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लॉज, कोर्ट्स अप्लाई द लीगल प्रिंसिपल्स टू स्पेसिफिक केसेस टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। उसके बाद थर्ड वन इज एन प्रेसिडेंट स्टेयर डिसीजन, past judicial decisions guide the future cases to ensure the consistency into the law. Fourth one is in judicial review. Judicial review में courts have the power to assess the validity of the legislative and executive actions. क्या बोला है? Judicial review में court have the power to assess the decision of the future cases, ensures that the consistency into the law. जो past judicial decision रहते हैं उसको हम क्या जो present और future में decisions आते हैं उनके ऊपर हम apply करते हैं। अब judicial creativity which means the judicial creativity refers to the ability of the judges to interpret and develop the law innovatively. क्या बोला है? जुडिशियल क्रिएटिविटी जो है, जुडिशियल क्रिएटिविटी refers to ability of judges to interpret and develop the innovatively. ओके, यहाँ पे जो है इनोवेटिवली क्या होता है? जुडिशियल क्रिएटिविटी रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ जजेस टू इंटरप्रेट एंड डेवलप द लॉज इनोवेटिवली। उसके बाद स्पेशली इन एरियाज वेयर द लीगल प्रोविजंस आर एम्बिगियस है और साइलेंट है, वहाँ पे जुडिशियल क्रिएटिविटी क्या रोल ऑफ जजेस प्ले करता है? वहाँ पे इट प्लेज द क्रूशियल रोल इन टू द अडेप्टिंग द लीगल सिस्टम टू सोसाइटल चेंजेस में। उसके बाद जो है एग्जाम्पल्स ऑफ जुडिशियल क्रिएटिविटी में क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे? वहाँ पे हम बेसिकली एग्जाम्पल्स में क्या लेंगे? द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।
The famous, which is the doctrine of basic structure. The doctrine of basic structure, the Supreme Court of in case of Keswanand Bharti versus State of Kerala 1973 evolved this doctrine to limit a parliament's power to amend the constitution. Second one, expansion of the fundamental rights. Expansion of the fundamental rights. Court have interpreted the rights broadly, such as the recognized the right to privacy as a fundamental right. In the case of the Puttasamy versus the Union of India 2017 में right to privacy recognize हुआ है. क्या हुआ, आप दो एग्जांपल्स भी याद रख सकते हैं यहाँ पे. बेसिकली जो फेमस केस है वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में डॉक्टर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है, वो हमें पता. उसके बाद राइट टू प्राइवेसी के पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में हुआ है. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, द जुडिशरी हैज़ अलाउड द PIL to ensure the social justice and protect the marginalized groups. उसके बाद फोर्थ वन इज एन कॉमन लॉ डेवलपमेंट. कॉमन लॉ डेवलपमेंट, जजेस हैव played a role in developing the laws in areas like the law of contract, tort and human rights. Difference between the judicial process and judicial creativity में difference क्या है? Okay, difference between the judicial process and judicial creativity. The judicial process refers to systematic method through which the court interprets and apply the laws to resolve the disputes. Judicial process refers to systematic methods through which the courts interpret and apply the laws. Court interprets and applies the laws to resolve the dispute to ensure the justice and legal consistency. It follows a structured approach based on the statutes, precedents and constitutional provisions. तो ये हुआ judicial process. In other hand, the judicial creativity is the ability of judges. Judicial process refers to systematic method through which the court क्या करता है, interpret करता है. But in judicial creativity, it is the ability of judges की ability है to go beyond the strict legal context and develop the law innovatively and address the gap and ambiguities and evolving the social needs को इवॉल्व करना है. सबसे पहले जो है वो नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस डिफरेंस में कैसे है. द जुडिशियल प्रोसेस इज द प्रोसीजरल एंड फॉलोज द इस्टेब्लिश्ड लीगल फ्रेमवर्क्स. जो जुडिशियल प्रोसेस है ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड एंड जो लीगल फ्रेमवर्क्स है उसको फॉलो अप करता है. उसके बाद जो जुडिशियल क्रिएटिविटी है वो जजेस क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं वहाँ पे. जुडिशियल क्रिएटिविटी इज द फ्लेक्सिबल है एंड अलोज फॉर द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग ऑफ द लॉज. उसके बाद सेकेंड वन इज एन फंक्शन. The judicial process ensures that function में legal stability and fairness, impartiality and consistency, while the judicial creativity helps in adapting the laws to be contemporary challenges. जो judicial creativity है helps जो continuously contemporary era में जो challenges आ रहे हैं उसको कौन जो creativity क्या करता है, help करता है to resolve the problems. उसके बाद जो है डिपेंडेंस ऑन प्रेसिडेंट. उसके बाद जो है डिपेंडेंस ऑन प्रेसिडेंट में द जुडिशियल प्रोसेस प्राइमरली रेफर्स और रिलाइज ऑन द प्रेसिडेंट्स. जुडिशियल प्रोसेस किस पे डिपेंड होता है, प्राइमरी बेस्ड ऑन दी जो स्टैट्यूटरी लॉज रहते हैं, जो प्रेसिडेंट्स दैट इज केस लॉज रहते हैं. फिर जुडिशियल क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स द मॉडिफाइंग और एक्सपांडिंग द प्रेसिडेंट को मॉडिफाई करना, एक्सपांड करना और जो इंट्रोड्यूस द न्यू लीगल प्रिंसिपल्स जो है. जैसे कि हम इसमें एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं, 3 क्रिमिनल बिल्स ले सकते हैं यहाँ पे. BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता लिख सकते हैं. फोर्थ वन इज एन जुडिशियल रोल. इन द जुडिशियल प्रोसेस जजेस एक्ट एज एन इंटरप्रिटर्स. जुडिशियल रोल में जुडिशियल प्रोसेस में क्या होता है, जजेस एक्ट एज एन इंटरप्रिटर्स of the existing laws, while the judicial creativity they may take an activist role in shaping the legal developments. जो लीगल डेवलपमेंट कौन करता है यहाँ पे, जजेस जो है वो लीगल डेवलपमेंट जुडिशियल क्रिएटिविटी में कुछ तो क्रिएटिविटी करते हैं वहाँ पे ऐसे. उसके बाद हम एग्जाम्पल में लिखेंगे
Example, the judicial process includes the regular court proceeding. जो judicial process है, regular court proceeding, statute refer करना, उसके बाद जो हम precedents है वो refer करना, application of law होगा. Whereas judicial creativity is an evident in the landmark judgments जो रहते हैं, like the expansion of fundamental rights. जैसे कि के पुट्टा स्वामी का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं. के पुट्टा स्वामी में जैसे राइट टू प्राइवेसी पहले नहीं था, अब राइट टू प्राइवेसी एड ऑन हो गया. जैसे कि आर्टिकल 20A जो है राइट टू एजुकेशन है, वो भी बाद में ऐड ऑन हो गया. राइट और द इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन्स लाइक द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, हम केशवानंद भारती का केस भी यहाँ पे लिख सकते हैं. इन समरी, while the judicial process ensuring the consistent application of laws, judicial creativity क्या allow करता है to evolve and refine the legal principles to address the social changes and justice needs. अब हम क्रिटिसिज्म एंड सजेशन ऑन द जुडिशियल प्रोसेस एंड जुडिशियल क्रिएटिविटी देखेंगे. सबसे पहले क्रिटिसिज्म, जुडिशियल ओवररीच. जुडिशियल ओवररीच का मतलब, critics argue that excessive judicial creativity leads to the judicial overreach, whereas the court interfere with the legislative and executive functions. Court interprets the legislative and executive functions, disrupting the separation of powers. क्या बोला है? जुडिशियल ओवररीच, क्रिटिक्स द आर्ग्यू दैट एक्सेसिव जुडिशियल क्रिएटिविटी हो सकता है, लीड्स टू जुडिशियल ओवररीच हो जाए. एक्सेसिव अगर वो बियॉन्ड द रीजनेबल जाके वो अगर वर्क कर रहे हैं वो तो जुडिशियल ओवररीच हो सकता है. उसके बाद जो है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. Unlike the elected representatives, judges are not directly accountable to the public, raising concern about the unchecked judicial activism. नेक्स्ट वन, इन जुडिशियल जो इनकन्सिस्टेंसीज इन डिसीजन हो सकता है. जुडिशियल क्रिएटिविटी कैन समटाइम्स लीड टू इनकन्सिस्टेंसीज. रूलिंग एज अ डिफरेंट जजेस मे बी इंटरप्रेट द लॉज डिफरेंटली, लीडिंग टू द लीगल अनसर्टेनिटी. डिले इन जस्टिस. नेक्स्ट फोर्थ वन इज एन डिले इन जस्टिस. द जुडिशियल प्रोसेस कैन बी स्लो एंड कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ पे कॉजिंग द डिले इन डिलीवरिंग द जस्टिस, स्पेशली व्हेन द कोर्ट्स टेक द टाइम टू इंटरप्रेटिंग एंड द इवॉल्विंग द लीगल प्रिंसिपल्स. उसके बाद फिफ्थ वन इज एन अनडेमोक्रेटिक नेचर जो रहता है. सिंस द जजेस आर नॉट इलेक्टेड, जजेस इलेक्टेड नहीं रहते, मेकिंग लॉज थ्रू द जुडिशियल क्रिएटिविटी इज समटाइम्स सीन एज द अनडेमोक्रेटिक एंड बियॉन्ड द इंटेंडेड रोल. जो है बियॉन्ड द इंटेंडेड रोल जाके वो लॉज वो बनाती है. उसके बाद जो सजेशन है वहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए. Suggestion में balanced approach means the court should strike a balance between the judicial restraint and judicial activism to ensure that they do not have exceed their constitutional mandate. Clearer legal frameworks. Legislature should draft laws with the more clarity, reduce the need for the judicial creativity in interpreting the vague or ambiguous provisions. Strengthening the precedent, the judicial powers. Strengthening the precedents, the judicial powers, judiciary should be established well defined guidelines to ensure the consistency in the creativity and interpreting the minimize arbitrary rulings. Judicial training continues the training and the legal education for the judges, help them make more informed and balanced decisions. Public engagement, greater transparency in the judicial appointments and the decision making can help in the maintaining public trust and the ensuring that the judicial creativity aligns with the democratic values. उसके बाद जो है वो well functioning judicial system should ensure that the judicial creativity complements rather than the replaces legislative intent while maintaining the integrity and efficiency of the judicial process. फिर से केस लॉज में कौन से केस लॉज आएंगे? जुडिशियल प्रोसेस एंड जुडिशियल क्रिएटिविटी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर. Establish the basic structure doctrine holding the parliament cannot amend the constitution a way that destroys the fundamental principles. A.K. Gopalan versus State of Madras demonstrated the rigid application of the law and the where the principal or Supreme Court narrow interpreted the Article 21 right to life and personal liberty. Maneka Gandhi versus State Union of India expanded to interpretation of the Article 21, ruling that the right to life
includes the personal liberty with a broader scope than the previously recognized. ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla 1976, it is also known as an habeas corpus case, showed the judicial restraint as the court upheld that the suspension of the fundamental rights during the emergency. Thank you.